Good morning, students. Welcome to the online class of computer. Today we are going to start our chapter number 5, Microsoft Excel 2000 part 2. In the previous lecture, we have seen some important facts about Excel. Okay, we have learned some simple calculation using Excel formula. Now we are going to learn some more thing about Excel. Page number 43. You can see integer is there. First topic is our int, that's integer. Integer function is used to find integer part of from the fraction number, that is number with decimal point. In short, int function return the digit on the left side of the decimal point. Enter is equal to integer in bracket 12.99 in cell b1 and is equal to integer 0.943 in cell b2 and observe the result. Now here you can see here integer value हमें दी जाती है. ओके, सो वी फ्रैक्शंस नंबर होता है, उसे हमें डेसिमल नंबर देखने होते हैं. ओके, ये फॉर्मूला आप डाल के कोई भी इंटीजर पार्ट फ्रैक्शन से निकाल सकते हो. ओके, सो दिस वाज द आवर इंटीजर पार्ट. सेकेंड वन इज len. len फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डिजिट्स. तो इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डिजिट. तो कितने कैरेक्टर्स हैं और डिजिट कितने हैं और ब्लैंक स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर इन अ सेल. सो ये फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो. एंटर इज इक्वल टू len इज इक्वल टू वेलकम 2010 इन सेल b1 इज इक्वल टू len 100 minus 1 in cell b2 and is equal to len 100 minus 1 in cell b3 and observe the result. The string are written with double inverted commas. Output of is equal to len 100 minus 1 is 2 because Excel first calculation is 100 minus 1 which is 99 and then count the number of characters but the output is equal to len 100 minus 1 is 1 because 100 minus 1 is a string to Excel will not perform any calculation on it. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखा गया कि जितने आपको नंबर्स और डिजिट है वो आपको काउंट करके बता देगा. जैसे यहाँ पे कितने डिजिट है 12, 2 एंड 5. तो ये जैसे आपको काउंट करके बता देगा. दैट्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डिजिट. तो उससे कैरेक्टर्स और डिजिट कितने हैं एक स्ट्रिंग में वो आपको बता देगा. ओके, नेक्स्ट वन इज काउंट. Count function is used to count the number of cells that contains numeric values like number, date and time. Type the data in cell A1 to B4 as shown here. Now enter is equal to count A1 dot B4 function in cell B5. As you can see the answer is 3 because there are 3 cells in the range A1 B4 containing numerical values. Now students, here you can see here you can make the counts of the sums. Total count कितना है आपको एक रो में पता चलेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज लेफ्ट एंड राइट. let function is used to extract specific number of characters from the left side of a string and right function is used to extract specific number of character from the right side of a string. Type the text magic of computer is cell 1 and now type is equal to left comma 8 in cell b1 and is equal to right a1 7 in cell b2 in and see the result. Here you can see कुछ कैरेक्टर्स वो आपकी स्ट्रिंग से लेता है. यहाँ पे आपको रिजल्ट देखा आपने, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक में मैजिक ऑफ कंप्यूटर है उसे हाफ कर दिया गया है. तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड के यूज़ से आप ये फॉर्मूला से एक स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ें निकाल सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, मीट फंक्शन extracts specific number of characters from starting position you specify and the number of characters you specify. Type the text magic of computer in cell A1 and type is equal to meet A1 7.2 7,2 in cell B1. This will extract 2 characters from 7 characters of the string magic of computers.
तो ये मिडल का नेम आपका निकाल सकता है उसके अंदर से, आपकी स्ट्रिंग में से। ओके। कंडीशनल फंक्शन if is a condition statement used to check condition. It takes action depending on the result of the condition. The general syntax of if statement is if logical test, value if true, value if false. So this is the if condition. It will return the true. If the condition is satisfied, it will say as true, or otherwise it will say false. Example, type 108 in cell A1 and then enter the following f function in cell B. When you type this function, you can see 108, and in the left side, if it's more than 100, it will say century. If it is less than 100, it will say no century. सेंचुरी कितने की होती है? 100 ईयर्स की होती है। 100 से ज़्यादा होती है, राइट? The if statement will check whether the number written in the A1 is greater or equal to 100 or not. If it's then it will print century, otherwise it will print no century. Open a blank worksheet and type the data shown in column A and enter the formula as shown in column B and observe the output. Now you can see here in this formula is given here 55, 91 and Z are there. So these are you can see, and you can apply this formula and you can see the result. Okay. So this was our conditional function, and this was our Excel, which we have studied the different function. In the next lecture we are going to see some more details about copying function and how to use the reference, absolute call reference. Okay. So this was our Excel now. This was all for today now. Thank you and have a nice day. Okay.